बिनते मुस्लिम हूँ बिनते मुस्लिम, मैं बिनते मुस्लिम हूँ बिनते मुस्लिम, मैं बिनते मुस्लिम हूँ बिनते मुस्लिम। है कितना प्यारा मेरा मुकद्दर, मैं बिनते मुस्लिम हूँ बिनते मुस्लिम, मैं बिनते मुस्लिम हूँ बिनते मुस्लिम, मैं बिनते मुस्लिम हूँ बिनते मुस्लिम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, I feel really blessed that I have been given this opportunity. I would like to thank Dr. Asma Zahra Sahiba and the entire Bintul Muslim team. Okay, so as we begin, first of all, I would like everybody कि आप लोग सब अपने चैट बॉक्स में, चाहे आप जूम पे हो या आप यूट्यूब पे हो, अपने चैट बॉक्स में आप आपके रोल मॉडल, जिसको भी आप रोल मॉडल समझते हैं, वो आप आपके इसमें डाल दीजिए। चैट बॉक्स में आप प्लीज डाल दीजिए आप किसको रोल मॉडल समझते हैं। कोई सेलिब्रिटी हो या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई लीडर हो, जो भी आपका रोल मॉडल है, आप प्लीज उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाउ डू पीपल जनरली चूज देयर रोल मॉडल्स? अगर हम लोग वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हाउ डू पीपल चूज देयर रोल मॉडल्स? सबसे पहले शायद उनका कोई अचीवमेंट हो, इफ दे हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग। सेकेंडली हो सकता है कि दे आर स्किल्ड, दे आर गुड एट समथिंग, चाहे वो क्रिकेट में अच्छे हो या कोई स्पोर्ट में अच्छे हो, इफ दे आर गुड एट एक्टिंग, जो भी रीजन है, देन पीपल एडमायर दोज पीपल हु हैव गुड लुक्स। अगर कोई खूबसूरत दिखने में है तो लोग उनको एडमायर करते हैं। अगर किसी के पास बहुत सारा वेल्थ हो तो लोग उनको एडमायर करते हैं। सैड रियलिटी इज दैट टुडे अ लॉट ऑफ पीपल उन लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं और उन लोगों को they consider those people to be role models जो जितना immoral कोई इंसान हो उतना उसको रोल मॉडल समझा जाता है और उतना लोग उनको इम्पोर्टेंस देते हैं और उतना उनको फेम मिलता है। तो लेट अस कंसिडर कि अगर हम लोग इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो who should be our role models, whom should we look up to? So if we consider from the Islamic perspective, तो कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए रोल मॉडल में, जिसके हिसाब से हम उनको जज कर सके कि ठीक है ये इंसान हमारा रोल मॉडल हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन शुड बी नोबल इन कैरेक्टर, वो अच्छे अखलाक का इंसान होना चाहिए। नेक्स्ट, दैट पर्सन शुड इंस्पायर गुड, कुछ उनसे अच्छाई हमको सीखने मिलना चाहिए, उन्होंने कोई अच्छाई को प्रमोट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट, दे शुड लिव अ पॉजिटिव लेगेसी, they should, even after they die, they should be known for something good. जनरली फ्रॉम द इस्लामिक पर्सपेक्टिव कौन हमारे रोल मॉडल्स होते हैं? अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से पूछो तो प्रॉफिट्स, तो मेल, हम लोग जनरली मेल लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं बिकॉज प्रॉफिट्स, ऑल द प्रॉफिट्स आर मेल, ऑल द सहाबाज आर मेल, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस मेल प्रॉफिट्स को देते हैं, मेल रोल मॉडल्स को देते हैं। बट द प्रॉफिट हिमसेल्फ हैज सेड दैट द बेस्ट ऑफ वुमेन अमंग द पीपल ऑफ पैराडाइज आर फोर: खदीजा बिन्त खुवैलिद, Fatima bint Muhammad, Maryam bint Imran, and Asya bint Muzahim, who is the wife of Firaun. So apart from this, there are others who are also, Khadija bint Khuwailid, Aisha bint Abi Bakr, Zainab bint Ali, Fatima bint Muhammad, Hafsa bint Umar. All of these women, they were either business women, they were great scholars, they were people who fought in wars, they were people who led their household, people who have been taking care of their families, their children, and they have been amazing mothers. तो ऐसे नहीं है कि इस्लाम हमको कोई चीज से लिमिट करता है, इस्लाम empowers women. So these can be our role models. So the few role models that I have chosen here are okay. So I just want to confess that Musa alayhi salam, he is one of my favorite prophets. So इसलिए I have chosen a few people that revolve around the story of Musa alayhi salam. So Musa alayhi salam is the Musa, the mother of Musa alayhi salam. She is someone who has sacrificed her motherhood for Allah subhanahu wa ta'ala. She believed in Allah's plans so much, and she had so much faith. Her faith was so strong. So she teaches us to follow the plans of Allah even if we do not understand them. I repeat, even if we do not understand the plans of Allah. So उनके बहुत इंपॉर्टेंट हमको ये लेसन उनसे मिलता है कि अगर हमको अल्लाह के प्लान्स नहीं भी समझ रहे तो हमको वो प्लान्स पे तवक्कल करना है।
she left her baby, newborn baby, into the river Nile. उन्होंने बस वो न्यूबॉर्न बेबी को रिवर में छोड़ दिया. उनको नहीं पता था कि वो बेबी के साथ क्या होने वाला है, वो जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा, बिकॉज उस टाइम पे फिरौन सारे न्यू बेबी बॉयज को मार रहा था. तो उनको नहीं पता था, बट उनको सिर्फ ये पता था कि अल्लाह के ऊपर तवक्कल करेंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और अल्लाह उनके सारे आजमाइश को दूर कर लेगा और अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर. तो उनको सिर्फ इतना अल्लाह पे तवक्कल था और उनको कुछ नहीं पता था कि उनके बेबी के साथ क्या होने वाला है, बट उन्होंने तवक्कल किए एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू नो हु प्रॉफिट मूसा टर्न्ड आउट टू बी. So next is wife of Musa alayhi salam. Again, people revolving around Musa alayhi salam. So she is someone, Musa alayhi salam is someone who was so confident. She is someone who she went up to her father and she proposed for Musa alayhi salam, and she convinced him that she wanted to marry Musa alayhi salam. She was a very intelligent, strong woman, confident woman, and she knew how to deal with men. She was not materialistic. She did not consider that Musa alayhi salam was a homeless man at that time. He did not have money. He did not have a home. But still, she decides that she wants to get married to him. And despite of all these qualities, she was modest. Unko haya the unke andar. She was dignified, and she was totally covered. बिल्कुल भी उनकी तरफ से कोई बेहयाई नहीं हुई. So this is another example. She is another role model for us. Next is Maryam bint Imran, who is the mother of Isa alayhi salam. So Maryam alayhi salam is someone so special that Allah has revealed an entire surah named after her. And she is the only woman, सिर्फ वो अकेली एक औरत है जिनका नाम अल्लाह ने कुरान में लिया है. Subhanallah, such an important person, such an inspiration for us, and every mention in the Quran is very powerful. So वो ऐसे ही नहीं हुआ. How do we know why she's so special for Allah? So first of all, from a very young age, जब वो बहुत छोटे थे, तब से she would sit in confinement, she would sit in isolation, अकेले बैठा करते थे और वो बस अल्लाह की worship करते थे. And because of that, Allah loved her so much. और वो उनके रूम में बैठे होते थे, एक रूम में, और वो अल्लाह की बस इबादत करते थे. And Allah used to send her food from the heaven. अल्लाह उनको जन्नत से खाना भेजते थे. तो अगर हम लोग ये सोचते, और इतना miraculous था वो कि she used to be eating summer fruits in the winter. So naturally we know that it is from Allah, because especially at that time that this is not a possibility. So you would say that, you know, if she is our role model, then should we just sit in a room कि हम लोग एक रूम में बैठ जाए और अल्लाह की इबादत करें और ये एक्सपेक्ट करें कि अल्लाह हमको खाना भेजे आसमान से? Obviously not. This is not what you're talking about. So what we need to do is we need to try to achieve her level of faith. हमको ये कोशिश करना है कि हम उनके जितना ईमान हमारे अंदर ला सके. हमको ये कोशिश करना है कि हम उतनी इबादत कर सके जितनी मरियम अलैहिस्सलाम करते थे. उनको हम फिर रोल मॉडल समझेंगे जब हम उनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे. She is the icon of modesty. She is the definition of taqwa. So even when she was pregnant with Isa alayhi salam, it was such a difficult time for her. इतना मुश्किल उनके लिए वक्त था, because उनको physical pain हो रहा था जो pregnancy में labor pain होता है. उनको psychological इतना tension था, इतना pressure था कि लोग क्या कहेंगे उनके बारे में, क्योंकि वो एक untouched woman थे, वो unmarried woman थे, and now that she is pregnant, what will people talk about her? लोग क्या बोलेंगे कि वो उनके बारे में नाम रखेंगे. People will point out fingers to her. But all she knew is that Allah was with her. उनको और कुछ टेंशन नहीं था. उनको सिर्फ बस इतना था कि Allah is there with me. I don't care what is going to happen. And sometimes it used to be, it's not easy, brother. It's not easy, sisters. What if we see, then she would, you know, there used to be times when she used to cry and she used to wish that, you know, she just used to wish that she would be dead and forgotten. वो सिर्फ ये चाहते थे कभी-कभी कि काश ये सब होने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई. तो it was not easy for her, but she never gave up. उनको अल्लाह पे पूरा भरोसा था that Allah will make it easy for her. And this is the sabr that we need to achieve. This is what we need to learn from her. Apart from that, she was a single mother who raised a prophet. This is another lesson for us women who think that women are not capable of anything, and single women are, they are not capable of anything. They are not able to do anything. So she is an example that she was, being a single mother, she raised a prophet. And she was so special to Allah that Allah revealed an entire surah was dedicated to her.
So what do we need to learn from her? We need to learn her faith, we need to learn her sabr, we need to learn her tawakkul, and most importantly, we need to learn from her that young women, young people, as young Muslimas, we need to try to worship Allah from a very young age, just like she did. And also, if mothers are watching this, if you think that we've already lost our young youth, so what do we do? So obviously we can all try that our children, if not us, have benefited from it, we can try that our children benefit from it, and they are connected to Allah and they worship Allah from a very young age. So next is Asiya bint Muzahim. Now, Asiya bint Muzahim was, like most of us know, she was the wife of Firaun. And who is Firaun? He is no ordinary man. He is the richest king of that time. Asiya is the wife of the world's richest man, the world's richest king of his time. And this man, Firaun, he claimed himself to be God. वो खुद को खुदा मानता था. वो बहुत ही जालिम इंसान, बहुत ही oppressive, बहुत ही unjust इंसान था. So, and this woman, his wife, she was the queen. She had all the palaces, महल थे उनके, and everything at her feet. उनको सिर्फ उनकी ख्वाहिश होती थी और वो चीज उनको मिल जाती थी. लेकिन जब मूसा अलैहि सलाम ने इस्लाम का दावा दिए, and Musa अलैहि सलाम is her adopted son. So when she heard the message of Islam, then she surrendered to Allah and she decides to accept Islam. And one day she finally decides to confront Firaun. She goes up to Firaun and she tells Firaun, "Yeah, Firaun, I disbelieve in you. I do not believe in you, Firaun. I do not care what you are going to do. I don't care. Jo karna hai kar lo. I don't care. But I believe in the Lord of Musa and I believe in the Lord of Harun, who is the Lord of all worlds." So this Firaun, he was a very egoistic man. So much pride he had in himself. He was shocked. He could not take this. He felt so insulted that his own wife disbelieved in him. So Firaun tortured Asiya to the maximum. जितना वो torture कर सकता था, उतना फिरौन ने उनको torture किया. And he brought her in front of everybody. He whipped her. He made her bleed. और उन्होंने सबके सामने, फिरौन ने सबके सामने उनको strip किया. His own wife, he stripped her in front of everybody. But she remained firm in her religion. She did not give in. Next, Firaun hung her from the ceiling with chains from her breast. Just imagine, subhanallah. She would cry from the pain. इतनी उनको pain होता, इतना pain में वो रोने लगते थे, but उन्होंने हार नहीं माने. Don't forget, sisters, she was the queen. She had never seen any difficulty. उनके life में उनको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था. But अभी उनके साथ इतना बुरा सुलूक हो रहा था. फिरौन ने उनको डेजर्ट में ले जाकर उनको इतने दिन वहां रखा. उनको ना पानी मिलता था, ना उनको खाना मिलता था, और ना उनकी हक की इज्जत उनको मिलती थी. And while all this is going on, इतना उनको disrespect हो रहा है, इतना उनके साथ torture हो रहा है, she just used to look up to the heaven and she used to say to Allah, "Oh my Lord, build for me a house with you, close to you in Jannah." या अल्लाह, मेरे लिए एक घर जन्नत में बना दो, आपके नजदीक. और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और अल्लाह ने उनको आसमान में से उनका पैलेस दिखाया, उनका महल, जन्नत का उनका महल दिखाया उनको. And then she started to smile. What an amazing role model for us. What do we learn? What a test of faith. उनकी कितनी उनके ईमान की आजमाइश हुई थी, but उन्होंने हार नहीं माने. She had no attachment to this life. उनको ये दुनिया में हर चीज मिली थी, but what she wished for was her akhirah. What she cared about was her akhirah. So she chose all the glitter of this world for the akhirah. I ask you, my dear sisters, what are we ready to give up for the sake of Allah? हम लोग किस चीज को sacrifice करने के लिए तैयार है for the sake of Allah? So next and the last story, one of my favorite and very heart touching. So this is the story of the hairdresser of the Firaun. वो औरत जो फिरौन की बेटी की बाल बनाया करती थी. तो once she was combing her hair and जो कंघी थी वो उनके हाथ से गिर जाती है. And while picking it up, she says Bismillah. तो जो फिरौन की डॉटर होती है वो सुन लेती है कि ये बिस्मिल्लाह बोल रही है. तो वो पूछती है कि बिस्मिल्लाह कौन? अल्लाह? My father? You're talking about my father? So the hairdresser said, "No, I am not talking about your father. I'm talking about the Lord of your father, my Lord and your Lord." So this daughter of Firaun, she gets very angry and she goes and she complains to Firaun about it. So Firaun calls for her. सब कोर्टयार्ड के सामने, सब कोर्टयार्ड में सबके सामने वो उनको बुलाते हैं
और उनके 5 बच्चे हैं. The hairdresser has 5 children and he calls all of them. And the youngest child is still breastfeeding. वो अभी तक सबसे छोटा बच्चा है, वो अभी तक दूध पीता बच्चा है. तो Firaun asks her again that who is your Lord? So she says Allah is your God and my God. So they chained her. उनको chain करते हैं, उनको मारना चालू करते हैं. They start to whip her, but she was still firm in her religion. So Firaun ordered to bring a large and hot boiling oil container. So they get a very large container जिसमें वो boiling oil रखते हैं और वो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वो इंसान अगर उसमें चले जाए तो वो instantly जल जाएगा. And they bring all her children and all her children were brought one by one. So Firaun again, he ordered her, worship me, I am your God. And she says, never, I will never worship you and I will never take you as God. So then he takes the first son and he throws him into the boiling oil. वो boiling oil में जैसे वो बच्चा गिर जाता है तो वो पूरा disfigure हो जाता है, उसकी सब हड्डियां पिघलने लग जाते हैं. And then what he does is they brought the next son and then she was still firm in Allah. फिर उनका third बच्चा, फिर उनका fourth बच्चा. And then finally when it was time for the youngest, the breastfeeding child, वो थोड़े से हिचकिचाते हैं. This hairdresser, she gets a little hesitant. And then all of a sudden, Allah subhanahu wa ta'ala from above the 7 heavens, he causes this child to speak. इतना छोटा बच्चा वो बात करना चालू करता है. अल्लाह की ये miracle है. तो he says, be patient ya ummi, you are on the truth and Allah has promised you with the greatest heaven. अल्लाह ने तुम्हारे लिए promise किया है कि वो जन्नत में जगह देगा. तो वो she feels relieved. And then they throw this baby into the boiling oil and then she also was thrown next and she knew she was going to die but she didn't care about it. And then on the night of Isra wal Miraj, जब Prophet sallallahu alaihi wasallam जन्नत में जाते हैं तो he can smell this fragrance, this beautiful smell, and he asks Jibreel alayhi salam that ये किस चीज की खुशबू है? And Jibreel alayhi salam says that this is the fragrance of the hairdresser of Firaun's daughter and her children. So subhanallah, this woman, she sacrificed the lives of all her children and her own life only for the sake of Allah. So what a lesson this is for us, subhanallah. I ask you, my dear sisters, again, what are we ready to sacrifice for our? And now for all those people who still think that women in Islam are oppressed, they are treated backward, then the first person to embrace Islam, जो पहली औरत थी जिसने इस्लाम कबूल की थी, वो जो पहले इंसान थे जिसने इस्लाम कबूल किए थे, वो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, एक औरत. The first person die for Islam, जो पहले शहीद हुए थे, वो सुमैया अलैहि सलाम एक औरत, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक औरत है. The greatest scholar, जो सबसे बड़े स्कॉलर है इस्लाम के, एक औरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. वो औरत जो सबसे ज्यादा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते थे, वो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. और वो औरत जिन्होंने एक दिन में इस्लाम के लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किए थे, वो है खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. So again, I want everybody as we end this session, I request everybody to drop in the chat box who you consider to be your role model. Again, just revise your role models and try to put in who you would consider as your role model. Jazakallahu khair. इस्लाम की बेटियां जिन पे चले वो राह बुलाती है तुझको. इस्लाम की बेटियां जिन पे चले वो राह बुलाती है तुझको. तू मोमिना बेटी है जिनकी वो माए बुलाती है तुझको. कर पैरव दीने सादा की चेहरे पे नूर आ जाएगा. ए बेटी तेरा शौक़ फैशन पामाल हया कर जाएगा. ए बेटी तेरा शौक़ फैशन पामाल हया कर जाएगा. निस्वानी अज़मत को तेरे